So good morning to you all students. I think, am I audible to you all? Am I audible to you all? Yes, sir. Hello. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने CRO कंप्लीट किया था और अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा दैट इज फंक्शन जनरेटर और एन हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर एंड वेव एनालाइजर. तो ये हमारा थर्ड यूनिट का पार्ट है. So today we are going to study all these kind of the instruments. So first of all, we will study the distortion analyzer. That is harmonic distortion analyzer. Distortion means as you know कि कोई भी अगर वेवफॉर्म है, कोई भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेवफॉर्म है, अगर ये वेवफॉर्म अगर कोई जनरेट होती है तो कहीं से भी, तो इसके साथ साथ इसके हार्मोनिक्स भी megahertz frequency in the air. Yeah, generating the 70 megahertz frequency. तो what will happen कि 70 megahertz जो frequency है, इसके जो multiple frequency है, multiple orders means 70 into 2, 70 into 3, 70 into 4, 70 into 5. तो multiple frequencies with different amplitudes, with decreasing level of amplitudes भी generate होते हैं, उसको बोलते हैं harmonics. जैसे 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल मैंने जनरेट किया, ओके, तो 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट जब मैं करूंगा तो साथ में मेरा 4 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 6 किलोहर्ट्ज, 8 किलोहर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और हाफ में भी होगी 1 किलोहर्ट्ज, 0.5 किलोहर्ट्ज, यानी मल्टीपल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी जो मैं फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूं उस फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल भी जनरेट होता है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मल्टीपल जनरेट्स होते हैं उनको कहते हैं हार्मोनिक्स. और जो हार्मोनिक्स का जो एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड इज वेरी लेस. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल बढ़ेगा वैसे वैसे हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड भी घटेगा, राइट. और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बेस फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा. अगर मुझे 5 वोल्ट का सिग्नल चाहिए, 5 वोल्ट 2 किलोहर्ट्ज, तो जो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, उसका एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट होगा, लेकिन उसके जो हार्मोनिक्स होंगे, मल्टीपल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसीज होंगे, उनके एम्पलीट्यूड में बी इन मिली वोल्ट्स. ठीक है, किसी का जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा जैसे 4 किलोहर्ट्ज एंड 1 किलोहर्ट्ज लेफ्ट साइड और राइट साइड में, their amplitude may be in the 200 millivolt. फर्दर हार्मोनिक्स होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा 50 मिलीवोल्ट, राइट. तो इस तरीके से उनके एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज होंगे, बट साथ के साथ में हार्मोनिक्स आल्सो जनरेट्स. So how many harmonics have generate? What is the harmonic amplitude? और कभी कभी क्या होता है कि हमें हार्मोनिक्स भी जनरेट करने होते हैं. ठीक है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी हो, जैसे कि जैमर, यू नो दैट जैमर. तो वी जनरेट द डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि हमें पता नहीं है कि इस एरिया में कितनी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, मुझे उसको जैम करना है. तो जैमर जब जैम करेगा तो वो फंडा तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो जनरेट करेगा वहां से. तो बेसिकली जो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज डिस्टोर्शंस, ओके, और हार्मोनिक्स. तो हमारे पास में एक ऐसा मीटर है, जो मीटर जो है ना दैट बेसिकली मेजर्स, जनरेट्स दी generates and measure the distortions or harmonics. So that is called harmonic distortion analyzer. So as you see in the slide, the distortion means the alteration of the original shape of the waveform. जो ओरिजिनल शेप है जो मेरी वेवफॉर्म की, उसमें अगर कुछ अल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टोर्शन. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टोर्शन. And the function of the distortion analyzer means measuring the extent of distortions. कितना distortion उसमें हुआ है. The output differs from the waveform at the input introduced by the active or the passive devices. तो purpose of our here harmonic distortion analyzer is कि भाई मेरा जो frequency है उसमें कितना distortion हो गया है, कितनी मेरी शेप बिगड़ गई है, इनपुट में क्या थी और आउटपुट में क्या सिग्नल है मेरा अवेलेबल. सो दैट बेसिकली बीइंग मेजर्ड बाय द डिस्टोर्शन एनालाइजर. ओके, कितना चेंजेस हुआ है. सो एन एम्पलीट्यूड distorted sine wave is made up of pure sine wave components including the fundamental frequency f
of input signal and harmonic multiples of the fundamental frequencies 2f 3f 4f। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो उसकी हार्मोनिक साथ में जनरेट्स होती हैं, राइट। सो हार्मोनिक डिस्टोर्शंस कैन बी मेजर्ड, डिस्टोर्शन जो भी मेरे हार्मोनिक डिस्टोर्शंस है, जो मेरे हार्मोनिक्स जनरेट हुए हैं, बेसिकली दीज आर डिस्टोर्शंस फॉर मी, क्योंकि मुझे तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी चाहिए, बट उसके साथ जो हार्मोनिक्स जनरेट हो गए दीज आर नोन एज डिस्टोर्शंस। तो हार्मोनिक डिस्टोर्शंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर, which is generally called as distortion analyzer. So the harmonic distortion basically given by the THD, the total harmonic distortion, which is denoted by THD, and its fundamental formula is given as THD is equal to square root of summation of all the summation of square of all the harmonic RMS। जितने भी आपके हार्मोनिक्स है उनका जो RMS एम्पलीट्यूड है उनका, उन सब का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय द फंडामेंटल आरएमएस, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, सो दैट गिव्स यू टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस इन दैट पार्टिकुलर वेव फॉर्म, कि इस वेव फॉर्म में कितने टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस हैं। सो दैट फैक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो द टोटल हार्मोनिक्स डिस्टोर्शंस कैन आल्सो बी रिटन एज, ये इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा है मैंने कि THD इज आल्सो कैन बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर इवन, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको शुरू किया है, EF इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और E1 इज योर बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए E1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। E1 का मतलब है कि जो मेरी पहली फ्रीक्वेंसी है वो तो मेरी फंडामेंटल ही है, तो वो दैट इज आल्सो नोन एज EF। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड, जो मल्टीपल से जो शुरू हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर एंड डॉट 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 EN स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फंडामेंटल RMS वैल्यू ऑफ दिस। E is representing the RMS value of the frequency of the signal. So THD is the total harmonic distortion and EF is your amplitude of the fundamental frequency including the harmonics, and E2 E3 the amplitude of individual harmonics. So next is your that is some example is given, so just to go through this example you will understand this. So this is very simple. I think you would have gone through this, and this is very simple example is given here. So I think it is the THD has been calculated, that is equal to 34.07% in this case. So next is your wave analyzer. So this is about the harmonic distortion analyzer. This much is sufficient, and was little you have to write about what is harmonic distortion analyzer, about that, and what is its role, and what is the formula, and maybe sometimes some numericals comes with that. Next is your wave analyzer. So our harmonic distortion analyzer measures the, as I suggest, told you that harmonic distortion analyzer measures the total harmonic content in the waveform, right? So any complex waveform is made up of a fundamental and its harmonics. कोई भी waveform है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी मैं वेवफॉर्म अगर जनरेट करता हूं तो हार्मोनिक्स भी उसके साथ में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कोई भी अगर आप वेवफॉर्म अगर आप उठाएंगे, कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप लेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली बनी हुई होती है, उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं वो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप बात करें तो हर फ्रीक्वेंसी, हर सिग्नल अपनी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रखता है और साथ में हार्मोनिक्स भी उसके अंदर रहते हैं। दैट इज द इनबिल्ट सिग्नल्स in that, in the inbuilt frequencies in that signal. You cannot isolate these fundamental these harmonics from that particular signal से आप isolate नहीं कर सकते, but अब हम ये कर सकते हैं कि we can properly design some filters which can remove these harmonics from these from the my fundamental frequency.
तो हमारी जो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म आप लेते हैं, so that is made from the fundamental frequency and its harmonics. That is true. So wave analyzer is used to measure the amplitude of each harmonic or fundamental frequency individually. So that is the function of the wave analyzer. तो ये wave analyzer क्या करेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी एम्पलीट्यूड मेजर करेगा और उसके साथ में जो हार्मोनिक्स हैं उनके भी एम्पलीट्यूड आपको ये बताएगा कि इसके अंदर ये इतने हार्मोनिक्स हैं प्रेजेंट और इन हार्मोनिक्स का फर्स्ट हार्मोनिक का ये एम्पलीट्यूड है, सेकंड हार्मोनिक का इतना एम्पलीट्यूड है, थर्ड हार्मोनिक का इतना एम्पलीट्यूड है, सो दैट वी कैन टेक अ डिसीजन कि वेदर दीज हार्मोनिक्स आर गोइंग टू हैम्पर माय सर्किट और नॉट। उन हार्मोनिक्स का जो एम्पलीट्यूड है कहीं वो मेरे सर्किट में जो मैंने कंपोनेंट्स यूज किए हैं उनकी फंक्शनिंग के ऊपर उसके एम्पलीट्यूड हार्मोनिक्स के एम्पलीट्यूड का इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। इफ एम्पलीट्यूड्स आर वेरी लेस, वेरी स्मॉल, और मैंने अगर डिजिटल टीटीएल कंपोनेंट ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज किए हैं, ओके, और जिनका थ्रेशोल्ड वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज इज समवेयर नियर अबाउट 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, एंड इफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन मिली वोल्ट्स, तो आई विल नॉट बॉदर अबाउट these harmonics because these are in millivolts, so these are not going to hamper my circuit. But if my circuit is very sensitive, somewhere I have used the operational amplifier which can sense the voltage in microvolts, and if I apply these harmonics to such kind of these circuits, so these harmonics will also get amplified by the operational amplifier because these are in millivolts. So I have to see ki how many, what is the amplitude of these harmonics in my basic frequency along with my fundamental frequency. So the purpose of wave analyzer instrument is to measure the amplitude of each harmonic or fundamental frequency individually. So the instrument is tuned to the frequency of one component whose amplitude is measured. Very nice. क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को पहले हम उसको ट्यून करेंगे अपनी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए कि भाई मेरे को ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मुझे पता करनी है, और फिर इसके बाद में इसके मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज कितनी अवेलेबल है उसका भी एम्पलीट्यूड हमें बताया जाए। तो इंस्ट्रूमेंट इज ट्यून टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन कंपोनेंट whose amplitude is measured, and some wave analyzer have the automatic frequency control which tunes the signals automatically. तो आजकल जो wave analyzers हमारे पास में है अवेलेबल लैब में, वो we are not going to tune them, they automatically detect the highest component, highest amplitude component from that frequency, and it takes it as a fundamental frequency, and the other components present whose amplitude is smaller than these fundamental frequencies are considered as the harmonics. So this automatically that instruments detect that highest frequency and assume it as a fundamental frequency, and it will represent on the screen yes, this is the fundamental frequency and this is the amplitude of my fundamental component, and these are the harmonics, and this is the amplitude of these harmonics, right? So this is the basic the rectifier circuit I have shown here. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये this is the basic rectifier circuits we have drawn for the wave analyzer. Input signal is applied through the coupling capacitor. Basically, it passes only the sinusoidal components and blocks the DC component. AC components को pass करेगा C and the DC component को block करेगा. Then it is given to the primary of a transformer, and the primary of the transformer will generate the EMF and mutual EMF. That is EMF is generated by the primary the primary coil of this transformer, and that is mutually coupled through the secondary of this transformer, and another EMF is generated in the secondary, and that EMF is basically applied to the we have used the bridge rectifier here, and it is applied to the bridge rectifier, and that bridge rectifier, you know, the purpose of this is to convert the sinusoidal signal full wave to that is a rectified waveform we have obtained from this, and there is an indicating device, right? So let us see next. So the working process, let us understand the working process for the wave analyzer. The analyzer consists of a primary detector first, which is a simple LC circuit. So as I had shown you, this is the simple LC circuit. This is the capacitor C, and there is a L, that is the primary of the transformer is connected. So simple LC circuit is basically there.
that also works as a resonant, that also work as a resonant circuit, LC resonant circuit, which is tuned to the fundamental frequency. So it will pass the EMF, it will generate the EMF, maximum EMF for the fundamental frequency, because this circuit is basically tuned for a single frequency, L and C, resonant, single resonant frequency. So it will generate the maximum EMF only for the fundamental frequency for which this LC is tuned, and automatically your the amplitude of this fundamental frequency will be measured by the indicating device after the rectifier circuit. So the same thing is basically represented here. The analyzer consists of a primary detector, which is simple LC circuit. The LC circuit is adjusted for resonance at the frequency of a particular harmonic component to be measured. अब आप यहाँ पे अगर आप C की वैल्यू को, अगर आप या L की वैल्यू को, जनरली वी चेंज द वैल्यू ऑफ C, वी डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ L. L अगर वेरिएबल लेंगे तो इट इज बेसिकली इट बिकम्स वेरी लीकी, लीकेज प्रॉब्लम इज देयर इन वेरिंग द इंडक्टेंस. So generally we vary the capacitance. So we can vary the value of the capacitance and we can change the resonant frequency of this LC circuit. So as per our requirement, we can basically tune this LC circuit for our desired frequency. तो मुझे जो fundamental frequency measure करना है, तो उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए मैं C की वैल्यू को चेंज करूंगा और मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल चेंज एंड दैट सर्किट विल ट्यून टू दैट पार्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उसके लिए ये ट्यून हो जाएगा सर्किट एंड द आउटपुट गिवन बाय द मीटर विल बी for that fundamental, for that particular frequency. So the LC circuit is adjusted for resonance at the frequency of particular harmonic component to be measured. So it passes only the frequency to which it is tuned and provides a high attenuation to all other frequencies. बिल्कुल सही बात है, because जिस frequency के लिए मेरा ये LC circuit tune होगा, it will give the maximum EMF only for that particular frequency, and rest other frequency it will offer the highest impedance. So the EMF will be very less. So it passes only the frequency to which it is tuned and provides a high resonance to all other frequencies. The full wave rectifier is used to get the average value of the input signal, and the indicating device is a simple DC voltmeter that is calibrated to read the peak value of sinusoidal input voltage, to measure the peak value of the sinusoidal input voltage. So that is the basic purpose of this. So this is regarding the wave analyzer only, and this much only you have to write about that. What is the purpose of the wave analyzer? How does it work? What is the fundamental circuit? And what is the working process? So that is the basic thing is given in a very concise and very simplified way. I have presented the things to you so that it becomes very easy to write in the exam. Your next is your introduction to the function generator. Okay. So we function generator, we have already seen the purpose of the function generator. Function generator is a generator basically which generates the different type of the waveforms. Okay. So that is the basic purpose of the function generator here. So let us see the this is the basic diagram. You can see अभी आप lab में, इस बार lab नहीं हुई है हमारी, but we are hoping that we may get the chance to come to the college and to see the equipments and to verify the different experiments in the laboratory. So this kind of the function generator is available in our laboratory, and there are the different knobs are given on this to select the different waveforms. कि मुझे sine wave generate करनी है, square wave. This is the, just you see the third big knob from the left. If you see, so this knob basically represents the different type of the waveforms available from this. There is sine wave, triangular wave, square wave, like that, and different frequencies. The first knob basically represent the frequency, कि कितना frequency का आपको generate करना है. Second knob basically representing the amplitude, and like that and BNC probes are connected at the BNC connectors are connected for the coaxial cables. 3 connectors are given. So like that, these are the different controls are present on the front panel of the function generator. So what is function generator? First of all, function generator is a device that can produce various pattern of voltage at the variety of the frequencies and amplitude. So as I told you, तो फंक्शन जनरेटर का जो अगर वो लिखा है साइन वेव जनरेटर, तो द बेसिक पर्पस ऑफ दैट जनरेटर इज ओनली जनरेट द साइन वेव.
Square wave generator means it will generate only square wave. If it is function generator, कहीं function generator है तो it means it will generate all signals, means it will generate sinusoidal, it will generate square wave, it will generate triangular wave, like okay, the basic waveforms basically. So function generator is a device that can produce various patterns of voltages at variety of frequencies and amplitudes, for different frequencies and different amplitudes. So it is used to test the response of a circuit to the common input signals, and the electrical leads from the devices are attached to the ground and the signal input terminals of the device and the test. So this is the basic purpose of the function generator. So features and controls, let us understand this. The most function generators allow the users to choose the shape of the output from the signal input. So the users can choose the shape of the output from the signal input. So let us discuss the features and controls of the function generator. So as you have discussed the basic purpose of the function generator we have discussed now. So let us the features and controls. The most function generators allows the user to choose the shape of the output from the small number of options. So generally function generators में options होता है कि आप अपनी requirement की shape जो आप choose करना चाहते हैं, जिस signal को आप generate करना चाहते हैं,
So that signal you can choose from the front panel knob, and you can generate the required type of the signal. Just say for example, that is square wave. The signal goes directly from the high to low voltage, right? Square wave. Okay, sine wave, the signal curves like a sinusoid from high to low voltage. Triangular wave, the signal goes from high to low voltage at a fixed rate. So these are the basic waveforms which is generated by the function generator: square wave, sine wave, and triangular waves. So the amplitude control on a function generator varies the voltage difference between the high and low voltage of the output signal. So जो amplitude control जो knob है, that basically amplitude control knob controls the amplitude of the generated signal. Okay, so whatever amplitude you want for that signal, suppose a square wave you want 2 volt, so you can set the 2 volt from the amplitude control. You want 3 volt, you can set the 3 volt for the square wave signals. You want 4 volt, so you can set the 4 volt for the square wave signal. So like that, your amplitude control can basically control on the function generator varies the voltage difference between high and low voltage. So direct current offset, there is another thing is the direct current offset, DC offset control on the function generator, which varies the average voltage of the signal relative to the ground. So this is the DC offset. DC offset means basic क्या होना चाहिए कि आपका जो कोई भी सिग्नल है उसको अगर हम मेजर करते हैं तो with respect to ground मेजर करते हैं. If we are saying कि the signal is having the voltage amplitude of 2 volt, so it is with respect to ground level 2 volt. If you are taking with respect to ground, otherwise in somewhere we take peak to peak also, -2 से +2 तक, that will become the 4 volt peak to peak. Otherwise, if you are taking with respect to ground, so it is 2 volt signal with respect to ground. So if the signal is basically shifted from the ground, अगर ground से थोड़ा सा ऊपर से shifted है, symmetric नहीं है, right? यानी +2 और -2 दोनों ground के reference से होना चाहिए, but it is shifted little bit above and below from the ground level, so that is called DC offset. That is called DC offset. यानी कि सिग्नल का जो वेवफॉर्म है वो ग्राउंड लेवल सेंटर में नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ऊपर नीचे है, तो दैट सिग्नल विल गेट शिफ्ट अप एंड डाउन. सो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट, DC offset. So the direct current offset control on a function generator varies the voltage, average voltage of the signal relative to the ground. तो ये कंट्रोल है. अगर आपका DC offsetting है तो you can adjust your DC offset from that knob. Then the frequency control of a function generator control the rate at which your output signal oscillates. या frequency control जो है वो frequency को control करता है knobs को. In some function generator, the frequency control is a combination of the different controls. So one set of control chooses the broad frequency range, yeah, order of the magnitude, and the other select the precise frequency. तो generally दो भी कंट्रोल होते हैं फ्रीक्वेंसी के. एक तो ब्रॉडर वे में फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, okay, in megahertz, kilohertz, and in gigahertz, like that. And there will be the another control which will be the very precise frequency controller. Yani it will vary the frequency in the range of the point, yani in the range of the decimal. Suppose you have chosen the frequency in megahertz range. So now the second knob will vary the frequency in 1 megahertz or 0.5 megahertz this values. Means suppose you want to change 90 megahertz to 93, so you can vary from the second knob, precise knob, 91, 92, 93, 95 megahertz, like that. But if you have selected in kilohertz range from the first knob, so then second wala precise knobs will vary the frequency in kilohertz only. So there may be the coarse and grain, इसको बोलते हैं कोर्स एंड फाइन. सो दो जो लार्जर वे में चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड कोर्स, एंड दी जो बहुत ही स्मॉलर रेंज में चेंज होती है दैट इज कॉल्ड फाइन. सो देयर आर हियर आल्सो देयर आर द टू knobs are present. So this is the block diagram of the function generator. Just we have already seen that, but again we are going to understand this. So this is the basic diagram of the function generator here. So first of all, that is the external frequency control. There is a external frequency control knob is there. Okay, तो यहाँ से हम एक fixed voltage यहाँ पे apply करते हैं. Then there is a frequency control network which is controlling the frequencies. Okay, that may be the filter and all is there. Then upper constant current source, then lower constant current source is there. After that, the output of the upper constant current source and lower constant current source is given to the integrator.
तो upper constant current source means it will generate the positive level of the signal, and lower constant current, so it will generate the negative voltage. Upper constant current source means it is generating the positive signal, positive voltage, and the lower is the negative voltage current source, and that is being generated from the frequency control, जो भी यहाँ से हमें frequency generate करना है, and that is given to the integrator. तो basic purpose of the integrator to integrate the input signal. ओके, कैपेसिटर आप देख सकते हैं इंटीग्रेटर के एक फीडबैक पाथ में लगा हुआ है पैरेलल में. So basically this combination of operational amplifier and capacitor is known as the integrator. So it convert the square wave, as I told you, into the triangular wave. ओके, अगर कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो इट गिव्स द लीनियर सिग्नल. तो स्क्वायर वेव टू ट्रायंगुलर वेव, तो जो कांस्टेंट जो अपर पॉजिटिव लेवल है, नेगेटिव पॉजिटिव लेवल है, सो दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लीनियर वेव फॉर्म्स, लीनियरली इंक्रीजिंग और लीनियरली डिक्रीजिंग वेव फॉर्म्स, and then it is given to the voltage comparators multi vibrator. So here the again we are using the operational amplifier in voltage comparator multi vibrator. So यहाँ भी ये saturation and non saturation state में चला जाता है जब voltage, क्योंकि comparator के दो input होते हैं, inverting and non inverting operational amplifier में. तो एक एंड अगर वो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज पे ज्यादा हो जाता है तो योर वोल्टेज रीचेस टू द प्लस वीसीसी, और कम हो जाता है तो वोल्टेज गोज टू द माइनस वीईई. So it means it is saturating between the two basic levels of the voltages. So that's why it is generating the square wave. So output of the voltage comparator multivibrator will always be an square wave. Okay, and that's why the output of this is being amplified by the output amplifier, and the square wave signal symbol is made here. So the voltage comparator always generate the square wave. Now the second output of the integrator is given to the resistance diode shaping circuit. So this triangular wave is basically being shaped by the diode and resistance combination circuit है, तो वो उसके पीक को basically truncate कर देता है, कट कर देता है triangular wave को. तो that triangular wave just looks similar to the sinusoidal wave. The peaks of the triangular waves are cut by the resistance diode shaping circuit. Okay, so these are the basically limiters, you can say. अब आप पढ़ेंगे आगे तो these are known as the limiters. So these limiters, आपने पढ़ा होगा parallel limiters, series limiters. So these are the limiters basically which limits the amplitude, and ये generate करते हैं signal similar to the sinusoidal waveform, and then again it is being amplified by the output amplifier, and sinusoidal signal you can see at the output. So this is the basic function of this function generator, and you can explain this in the exam also by drawing this basic circuit. Generally function generator exam में आता है, हर exam में आता है. Draw the diagram of the basic function generator, explain the function generator. So draw this basic circuit and explain the purpose of each and every block which I told you in a broader way. Because internal अभी circuit आपके syllabus में नहीं है, but you should know the basic purpose of each and every block. So next is the output waveform. You can see the frequency control regulates the two current sources. जो frequency control का जो block है, that basically regulates two current sources and controls the frequency. The upper current source, what does it do? It supplies the constant current to the integrator, produces an output voltage that is increases linearly with time, as I told you. क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा, पॉजिटिव सप्लाई देगा, तो पॉजिटिव देगा तो इंटीग्रेटर पॉजिटिव सप्लाई को लीनियरली इंक्रीजिंग लीनियरली वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, which voltage is that is linearly increasing, and the lower current source gives the negative voltage basically. तो the integrator what it will do, it will converts the output into the linear waveform, linear voltage with decreasing amplitude. So lower current source basically supplies a reverse current to the integrator so that its output decreases linearly with time. So this is the basic purpose of this lower current source. Next, you can see in the next slide that is the integrator output voltage is given by, this is the basic formula of the integrator output. Integrator का जो output मिलेगा उसका जो basic formula है 1 by C integration ITT and 0 to T, that is the basic integration of the signal. So frequency is controlled by varying the upper and lower currents, and increase or decrease in the current will increase or decrease the slope of the output voltage and control the frequency. So the voltage comparator क्या करता है, changes the state at a predetermined maximum
and the minimum level of the integrator output voltage. As I told you कि comparator जो है saturation and non saturation में चला जाता है, and it gives you the output in the either VCC plus VCC or minus VEE. When the predetermined level is reached, it changes the state and switches the current source and produces the square wave. As I told you, this is the basic purpose of this. So you can go through this and you can understand, and same thing you can write in the exam also. So the integrator output is a triangular waveform. As I told you कि integrator का जो output है वो triangular waveform होगा, and whose frequency is determined by the magnitude of the constant current source. जो constant current source का जो magnitude है that depends upon the frequency of the input signal, कि उसका frequency कितना है, जो भी है, and the comparator output delivers a square wave of the same frequency. जो comparator है वो same frequency का output generate करेगा, and the resistance diode network produces a sine wave from the triangular wave with less than 1% distortion. तो ये जो है आपका जो resistance diode network है, as I told you, this is a limiter circuit, so it produces a sine wave from the triangular wave with less than 1% distortion. So these are the basic functions we have seen here in this the function generator. Basic diagram we have basic diagram we have seen, basic purpose of each and every block we have seen, and this is the basic diagram which you need to explain. तो ये जो upper and constant current source is generating the fixed voltages as per the frequency, the integrator is generating the triangular wave, voltage comparator is generating the basically saturation non-saturation square wave, resistant diode shaping circuit converting triangular to sinusoidal waveform, and this is the basic purpose and this is the basic function of this function generator. So this need to write, बस इतना ही आपको एग्जाम में लिख रहा है, and you will get the maximum marks for the function generator. So this is the today's class content. तो आज हमने हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर, वेव एनालाइजर एंड फंक्शन जनरेटर तीनों के बारे में पढ़ लिया, and this is the content which need to remember by you for the exam purpose, and these are the very simple in nature, बड़े आराम से याद हो जाता है and you can represent in the exam. So hope you all would have understood this. Any doubt you can ask me. And now I am taking the attendance. This slide I will share on the Google Classroom. अभी पीछे वाली स्लाइड जो लास्ट क्लास ली थी वो भी शेयर शायद नहीं हुई है, so both I will share right now. Okay, things are left for me, and अभी आपकी लैब को भी वो जो प्रैक्टिकल्स फाइल था शायद वो भी शेयर नहीं हुई है, that will also I will share. मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो शेयर नहीं कर पाया, तो that will also I will share right now. So any doubt for you? ठीक है, so just keep it up and आप मेहनत कीजिए. अब आपके एग्जाम भी पास में ही आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबब्ली दैट विल बी इन जनवरी, सो तैयारी वगैरह शुरू कर दीजिए. राइट, चलो, ओके, बाय टू यू ऑल.